Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I'm your English teacher Zia Hamid. I hope that you're doing well. You are ready for today's video lesson. This is English 9 and we are on unit number 3. This is our lecture number 4. So I hope that you will enjoy this one because this is related to fiction. In the last lecture, we studied about stages of plot development. We saw that there are 5 different stages. It's like a story mountain going from here to all the way back and then at the end. And today, this SLO is also related to your reading comprehension and specifically reading fiction. Even in the non-fiction text, you can find some point of views, right? But we are specifically focusing on the fiction reading, reading stories, anything that is fictitious related to your imaginary world that's not related to reality. So if you want to be good readers of fiction, to learn moral lessons and read so many stories, but with critical thinking, critical analysis. So today our SLO says, and it demands us to examine different points of view, and they are first person, third person, narrative, etc. Okay, now, so there are 3 point of views basically when we are talking about reading. This is the first person point of view, or you can simply call it POV for short. POV stands for point of view. That's very good. Okay, so we have our first person point of view. Then we also have second person point of view, but that is not very much applicable into stories and reading, but we will learn it anyhow. And then we have third person point of view, and it is further divided into 3 categories, but mostly 2 categories are famous. So now let's talk about it. Here you can see the vertical linkage, and moving on, as we always do, a brainstorming activity to get you running, to get your brains running. Now imagine that you are telling a story. How would the story change if you were telling it from your own perspective? So, perspective क्या है? नजरिया. Now, the story can be told from first person. जिसके साथ ये हो रहा है वो खुद बता रहा है आपको. वो first person है. And I can tell about someone else's story, right? And I'm not mentioning myself. I'm saying he or she or it. Okay, now imagine you're telling a story, something that happened to you. क्या वो चीजें हैं जैसे जो आप लिखेंगे तो मुझे पता चलेगा कि ये आप पर बीती है, ये आप हैं इस स्टोरी में. लफ्ज है आई से पता चलेगा. मैं गया, I was going there. Once upon a time, I was getting really late for school, and I. This is a first person narrative. Narrative क्या है? A story. Okay? So if you are telling it from your own perspective, or if you're telling it from another perspective as a third person who's not involved in the story, क्या stories दोनों का अंदाज मुख्तलिफ होगा? Yes, perspective change हो जाएगा. तो हमने ये सीखना है कि हमने जब कुछ पढ़ना है तो हम easily recognize करें this is a first person narrative or either it is a third person narrative, and further कि ये third person narrative omniscient है या limited है या objective है. All right, so this is what we are going to do. Definitely when we are reading novels, when we are reading short stories of very good moral lessons for our comprehension, या पेपर में आपको एक पैसेज आता है and you are asked about to talk about the point of view or the perspective, then you will talk about it. या अगर आपको कहा जाता है कि analyze the story critically, इसको evaluate करें पूरा, so you will talk about the point of view, you will talk about setting, theme, different kind of story elements, devices used in the story, and then you can answer the question. Now, let's talk about a point of view. Viewing what?
the story. So point of view is the writer's way of deciding who is telling the story to whom. कौन स्टोरी बता रहा है किसको? ओके क्या जिसके साथ ये हो रहा है क्या वो खुद बता रहा है, द कैरेक्टर हिम और हर सेल्फ, और द नरेटर जो स्टोरी से बाहर है, बस आपको एक कहानी सुना रहा है, तो वो थर्ड पर्सन होगा, राइट? तो ये नजरिया है एक स्टोरी का. आइदर यू आर, या जो भी आप पढ़ते हैं इवन नॉन फिक्शन, तो हमने एनालाइज करना है राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. आइदर इट इज इंक्लूडिंग हिम or not including him. Does he know about everything that is happening in the story, or does he know or she know little about the story? Either he or she knows all of it. कौन क्या कैरेक्टर, कौन क्या फील कर रहा है, उस कैरेक्टर ने पास्ट में क्या किया, अब वो क्या करने वाला है. अगर नरेटर को सारा कुछ पता है तो ये एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है. लेकिन अगर नरेटर को सिर्फ एक कैरेक्टर के बारे में पता है, उसके जज्बात और एहसासात और फीलिंग्स और इमोशंस, तो इसका मतलब है ये डिफरेंट है. दिस इज थर्ड पर्सन लिमिटेड. तो पॉइंट ऑफ व्यू इन राइटिंग, when you're reading it, or even when you're writing it, when you are going to start writing a story, first you will have to decide what perspective or point of view am I going to choose. Am I going to tell the story in first person narrative, first person point of view? Am I going to tell it in third person's point of view? मकसद क्या है? स्टोरी बताना, इवेंट बताना, या कोई मॉरल लेसन देना, या कोई उसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ मैसेजेस देना. पहले हम डिसाइड करेंगे एज अ राइटर, एज अ स्टोरी राइटर, what would be our point of view. Then we will start writing our story. And when we are reading a story, we should know as a reader कि क्या point of view है पूरा. फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है, थर्ड है, थर्ड में भी कैटेगरीज है, कौन सा. सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो दिस. तो पॉइंट ऑफ व्यू इज who is telling whom. Either the person who's going through it telling it, or somebody who is not involved in the story is telling it. So we need to decide it. We need to see what is happening. Okay, so there are different points of view. Point of view is just a simple terminology. कैसे आप एक चीज को देख रहे हैं, उसके अंदर रहकर या एज अ ऑब्जर्वर, बर्ड आई व्यू से. बर्ड आई व्यू पता है आपको? आप दूर खड़े हैं और सब कुछ आपके सामने हो रहा है, हर चीज आपके सामने क्लियर है. तो कौन किसको बता रहा है और हमें कितनी चीजें पता है, और राइटर लिखने वाले को कितना पता है, ये सब हमें पॉइंट ऑफ व्यू से पता चलेगा. तो ओके, सो देयर आर थ्री मेन पॉइंट्स ऑफ व्यू of seeing something, of viewing: first person, second person, and third person. Of these, the third person point of view is broken down into further three categories: third person limited, third person omniscient, and third person objective. जब एक चीज ऑब्जेक्टिव का लफ्ज आ गया, इसका मतलब है हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है, हमारे ओपिनियंस, हमारा नजरिया उसमें नहीं होगा, क्योंकि अगर होगा तो क्या कहलाएगा? सब्जेक्टिव. तो वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव. सो ये है पॉइंट ऑफ व्यूज, बेसिक, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज डिवाइडेड इनटू फर्दर थ्री कैटेगरीज. वेरी गुड. ओके, अभी तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है? Are you clear about the students learning outcome? जी, रिस्पॉन्ड करें प्लीज. ओके, आसिफ raised thumbs up. That's good. Yes, Sadia, Rayan, the Renaissance School. Good. Ali, are you active? All right. Let's talk about first person's POV or point of view. So what are we looking at? Stories. As a good reader. Number one, in writing or when you are reading something, the first person point of view uses the pronouns. कैसे पहचानेंगे? I, me, we,
और us. जब आप ये देखेंगे फौरन पता चल जाएगा कि पर्सपेक्टिव क्या है, स्टोरी बताने वाला उसके अंदर इन्वॉल्व है. It is not a bird's eye view. It is not a third perspective or third person's perspective or point of view. It is rather first person point of view. Okay. आप पूछें सर ये us कैसे या we कैसे, ये तो एक पर्सन की बात है, वो पर्सन उसके अंदर इन्वॉल्व है. मे बी देयर इज अ स्टोरी अबाउट अ ग्रुप एंड द नरेटर इज पार्ट ऑफ द ग्रुप. नरेटर कौन है? जो बताने वाला है, जो स्टोरी को बता रहा है, उसे नरेट कर रहा है वन बाय वन के पहले ये हुआ. इट इज कॉल्ड नरेशन एंड द पर्सन हु इज नरेटिंग इज अ नरेटर. क्लियर? In order to tell a story from the narrator's perspective. Now, let's look at, let you give me an example of first person narrative. Yes, students. जब आप एक ऐसे लिखते हैं my first day at school, उसमें कौन सा perspective होता है, point of view? First person, मेरा. ठीक है? Or there's a character in a story, protagonist, and he is telling everything at the very start. So it means this is also first person. Alright? तो first person narrative में first person कोई story का character भी हो सकता है. Clear? उसमें लफ्ज आएगा so he told me, you know, he told me. आप ये नहीं कहेंगे he का लफ्ज आ गया तो ये third person होगा. No, he told me. जहां आपने मी, आई, ये वाले प्रोनाउंस देखे तो आपको पता चलेगा कि ये फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है. नाउ इन सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा? आपसे मुखातिब है राइटर, आपको बता रहा है यू. तो इन द सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू द नरेटर एड्रेसेस द रीडर. द narrator addresses the reader. And who's the reader? It's me or you or anybody who's reading the story or who's reading the writing, directly using the pronoun you. This perspective makes the reader feel like they are part of the story. जब आपको मुखातिब किया जाएगा बार बार as a reader, जैसे आप कहते हैं so you wake up in the morning at 7, you have your breakfast, you get ready for school. किसको मैं बता रहा हूं? रीडर को कह रहा हूं. तो रीडर को फील होगा कि स्टोरी का हिस्सा हूं मैं, आई एम पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड दिस विल एलिवेट द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर. रीडर का इंटरेस्ट बढ़ेगा, उसको अपनायत फील होगी कि आई एम ऑल्सो, मुझे बार बार मुखातिब किया जा रहा है. ओके. This perspective makes the reader feel like they are part of the story or that the events are happening to them. And then you will never forget the story, mostly because you are directly being quoted and you are directly being addressed as a reader. Okay. So just, I hope that you can see it on the screen. You just read this passage. You walk into the room and the first thing you notice is the smell of fresh coffee. The sunlight filters through the curtains, casting a warm glow on the wooden floor. You take a deep breath, feeling a sense of calm wash over you. As you move closer to the table, you see a note resting on top with your name written in bold letters. You reach out, your hand trembling slightly and picking it up, wondering what it could say. Now, what is the point of view of this writing or this passage? It's a second person point of view because you are involved in the story as a reader, right? How do you recognize it? You, the pronoun you. You can see that it is being repeated all over again. What else? You, your hand. Okay. So all these different kind of pronouns के personal होगा या आपका आपसे reflexive pronouns, all these pronouns will be related to you, the reader. So this is what we call a second person point of view. Now, a third person point of view or POV.
In the third person point of view, the narrator who's narrating the events or the story is not a character in the story, but he or she is an outside observer, and he is observing everything and telling you. So it means he is not part of the story. स्टोरी में उसका कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा है. Okay. This perspective uses pronouns. What pronouns will be used? He, she, they, and it. It for objects. They for more than one person. She for female, he for the male gender. Now, but अगर आप यहां पे देखें सेकंड पर्सन में, क्या उसने कोई जेंडर मेंशन किया है? Because you is gender neutral. You could be a female, you could be a male reading it, and he or she does not care, because for you, for him or her, for the writer, you are just the audience, the reader. आप किसी भी जेंडर के हो सकते हैं, लेकिन वो मेंशन यहां पे नहीं करेगा. ओके, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं. पहले थर्ड पर्सन omniscient. क्या लफ्ज है? omniscient. omniscient का क्या मतलब है? सोचें जरा जी. किसी को omniscient का मतलब पता है स्टूडेंट्स? जी, एनी आइडिया? जी शाबाश. omniscient का मतलब है जिसे सब पता है, knows everything, everything that is in the story. तो जब नरेटर को, जो आपको, जिसकी आप स्टोरी पढ़ रहे हैं, हर चीज पता है, कौन सा कैरेक्टर क्या कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल देयर आर 8 कैरेक्टर्स, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन उसमें सब, उसको सब पता है कि कौन सा कैरेक्टर अभी क्या करेगा, किस नेचर का है, कौन सा एक्शन होगा, क्लाइमेक्स किस तरह जाएगा, एंडिंग किस तरह होगी. ही नोज एवरीथिंग. ही और शी नोज एवरीथिंग. हु नोज इट? द राइटर. तो तब हम कहेंगे दैट द राइटर इज, एंड ही इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द स्टोरी. क्या थर्ड पर्सन में स्टोरी सुनाने वाला नरेटर इन्वॉल्व होगा? नो, क्योंकि वो तो थर्ड पर्सन है. थर्ड पर्सन हम कहते हैं बाहर के बंदे को, कि ये तो थर्ड पर्सन है, यानी इसका तो मामला ही नहीं है इस कहानी में, ये बस एज अ थर्ड पर्सन हमें बता रहा है. तो the narrator knows everything about all the characters, including their thoughts. कौन सा कैरेक्टर ने क्या सोचा, क्या फील किया, अब वो क्या करने वाला है या वाली है, हर चीज उसे पता है. किसको किसकी बात का बुरा लगा, कौन डरा हुआ है कैरेक्टर, कौन बहुत खुश है, किसने कौन सी बात किस तरह की, ये किसे पता है? और थर्ड पर्सन omniscient. omniscient का मतलब knowing everything. शाबाश. Feelings and backgrounds. He or she knows about the thoughts, the feelings, the different kind of decisions they are going to take, and backgrounds. The narrator can move freely between different characters' perspectives, providing a comprehensive view of the story. Comprehensive means जामे. Now, वो आपको एक पर्सन के पर्सपेक्टिव से स्टोरी नहीं सुनाएगा. वो कभी, लेट्स से 2 कैरेक्टर्स हैं, अली और उस्मान, वो बताएगा कभी अली के पर्सपेक्टिव से स्टोरी, कभी उस्मान के पर्सपेक्टिव से स्टोरी बताएगा. उसको सब पता है, ठीक है. तो ही इज नोइंग एवरीथिंग एंड ही कैन स्विच बिटवीन डिफरेंट कैरेक्टर्स. एक चैप्टर में एक कैरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे चैप्टर में या तीसरे चैप्टर में किसी और कैरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू. स्टोरी वही है, लेकिन हर कैरेक्टर का एक नजरिया है ना देखने का. कौन से कैरेक्टर ने क्या किया, दूसरा कैरेक्टर अफेक्ट होगा, वो भी अपने, वो बताएगा मुझे कैसा फील हुआ एज अ पर्सन, एज अ कैरेक्टर. सो ही कैन स्विच बिटवीन वन कैरेक्टर. 8 कैरेक्टर्स हैं, तो वो 8 डिफरेंट कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव को भी जानता है, हर चीज उसे पता है. The narrator can move freely between different characters' perspectives, providing a comprehensive view of the story. And in third person omniscient, you know so much more about the characters and the story, right? Because we know everything, because the writer knows everything. अगर राइटर को नहीं पता
तो वो हमें भी नहीं पता होगा. Good. So this is about third person omniscient. Now, let's look at this example. Sarah was nervous about the presentation, but she tried not to show it. Now, he didn't say I was nervous. He said Sarah was nervous. अब आप यहां कहेंगे कि he, she, it तो आया ही नहीं. तो Sarah भी नाउन भी आ सकता है. Sarah एक नाम है, वो एक और पर्सन है. तो हमने यहां से पहचाना कि ये स्टोरी थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू की है. Meanwhile, across the room, John was confident. Now, Sarah was nervous. John was confident. It means कि राइटर को, तो जो नरेटर है उसे पता है how's Sarah feeling at that time. She was nervous. How's John feeling? He was very confident. So it means that he does not only know about Sarah, but he also knows about John as well. Certain that his part would go smoothly, neither of them knew that the projector was about to break down. किसी कैरेक्टर को नहीं पता कि प्रेजेंटेशन के दौरान प्रोजेक्टर विल बी करप्टेड और ब्रोकन डाउन. दोनों कैरेक्टर्स को पता है ये? नहीं. नरेटर को पता है? यस. सो इट मींस दिस इज थर्ड पर्सन omniscient. Omniscient. Okay. Neither of them knew that the projector was about to break down, throwing their plans into chaos. Okay. So, हमें ये तो पता चल गया कि this is third person point of view. But in order to know that this is third person omniscient, हमने देखा कि he knows about everything. He knows about Sarah, she was nervous, and the writer knows about John, who was confident. And the writer also knows that the projector जिस पे वो presentation देने वाले हैं is going to break. They don't know, but he knows. यहां से हमें पता चला और यहां से भी कि जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थर्ड पर्सन omniscient है. वेरी मच क्लियर. और किसी चीज की जरूरत नहीं है. ओके, क्लियर? सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन थोड़ा सा मिक्स हो रहा है. एक दो आप बस थोड़ा छोटा जी. ओके, लुक, सेकंड पर्सन में क्या है? यू. और वो आपको स्टोरी, उसको आपका फुल नहीं पता, वो सिर्फ आपसे बात कर रहा है. आप कोई भी हो सकते हैं, आपको वो नहीं जानता. तो omniscient तो हो ही नहीं सकता सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन omniscient हो सकता है? he doesn't know about you. मैं कौन हूं, मेरी क्या एज है, मैं कहां से आया, मैं अभी क्या कर रहा हूं. he or the writer doesn't know. तो वेरी क्लियर. ओके, अब कंफ्यूजन खत्म? ठीक है. ओके, omniscient देखा हमने विद एग्जाम्पल. अब हम देखेंगे थर्ड पर्सन लिमिटेड as opposed to third person omniscient. Why? Because when you are telling a story, if you know about some things but not all of the things, it means your point of view is limited. महदूद है, बहुत ज्यादा limited point of view है, तो जिसको हम कहेंगे third person limited. अब वही एग्जाम्पल हम लिमिटेड में पढ़ते हैं. सेम स्टोरी. Sarah was nervous about the presentation, but she tried not to show it. अब इसका मतलब तो ये है कि ये थर्ड पर्सन है, क्योंकि वो किसी और के बारे में बात कर रहा है. Meanwhile, across the room, John was confident. अभी तक हमें लग रहा है कि ये तो थर्ड पर्सन omniscient ही है. अब हमें पता चलेगा कि ये थर्ड पर्सन लिमिटेड है. Certain that his part would go smoothly, neither of them knew that the projector was about to break down, throwing their plans into chaos. Now, yahan pe, okay, this is the right example. Sarah felt a knot in her stomach. ये तो वही एग्जाम्पल यहां पे रिपीट होगी ना, थर्ड पर्सन omniscient वाली. अब ये देखें, Sarah felt a knot, थर्ड पर्सन है, in her stomach as she prepared for the presentation. इसको इतना पता है कि Sarah nervous थी and she is about to get the presentation done. She hoped everything would go well,
but she couldn't shake the feeling that something might go wrong. क्या होगा गलत? बताया राइटर ने हमें? नहीं. Projector will break down. यहां तो उसने नहीं बताया कि क्या गलत होगा यहां पे. Something, कुछ भी. इसका मतलब है narrator is third person, but limited, very limited. उसको भी उतना ही पता है जितना कैरेक्टर को पता है. तो हम कहेंगे कि थर्ड पर्सन लिमिटेड. थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव. द नरेटर only reports or tells you what is observable through the actions and dialogues without insight into the character's inner thoughts. जब आप देखेंगे कि नरेटर कैरेक्टर की थॉट्स और फीलिंग्स में नहीं जा रहा, सिर्फ क्या कर रहा है, वैसे ही बता रहा है कि उसने ये किया फिर उसने ये किया, दैट्स इट. इट मींस दिस इज थर्ड पर्सन objective because the writer is having objectivity. Sarah walked into the room, glanced at notes. उसने notes देखे and adjusted the microphone. उसने audience को देखा, एक लंबा सांस लिया और बोलना शुरू कर दिया. क्या इसने बताया सारा नर्वस थी या वो शेक कर रही थी? कुछ बताया? कुछ भी नहीं बताया. इसका मतलब है ऑब्जेक्टिव है. ही द राइटर डज नॉट नो एनीथिंग अदर देन कि Sarah, he adjusted the microphone and she just started speaking. All right. Now, here you have this worksheet attached, a question bank and presentation. Can we just show the worksheet for like 10 seconds? The question bank, actually. Yes. Okay, very quickly. Now that we are clear about the point of views, अब यहां बताएं. I couldn't believe how quickly the day has passed. First person. What is the point of view here? You find a strange key on the ground and wonder. Good. Yes, students on the Zoom class, please give your feedback. यहां पे he knew that she was lying but he decided to play along. ये कौन सा point of view है? कैसे? Third person immediate. Yes. ऑब्जेक्टिव या लिमिटेड? जी, यहां पे जूम क्लास में कोई बताने लगा था. लिमिटेड. ओके. यहां पे Sarah walked through the door and immediately noticed the smell of fresh cookies. कौन सा point of view है? Omniscient. Good. Here, which of the point of view is used here? They watched the sunset together and lost in their own thoughts, though no one spoke a word. Third person omniscient. Yes, omniscient. यहां पे बताएं quickly. You open the box, revealing the hidden treasure. Second person. Okay. And this last one, because your physics lecture is about to start. What point of view is this? He walked to the store, thinking about what he would buy. Why? No, it's not second person. Third person. Third person नहीं. जी. इसमें बता रहे हो क्या सोच? Omniscient. Okay, that's all. So you can get this question bank and solve the rest of the questions by yourself. It's very easy, I hope, and I'm very glad that you understood the learning outcome really well. So अभी कोई किसी का सवाल है इस लेक्चर के बारे में? जी स्टूडेंट्स, सब क्लियर है? Okay. Okay, thank you so much. Take care of yourselves and Allah Hafiz.